Thank you. Thank you. Dear students, knowledge has no horizons. It is limitless. Today, we use technologies for gaining knowledge and get connected with each other. The distance between persons is vanished due to technology. Today, Department of Physics feels happy to arrange an innovative program of Virtual Tour to Innovation Hub, Learn Physics with Fun. In this program, we will be associated with Professor P.K. Ahluwalia sir, President IAPT from Kanpur, and Professor Y.K. Vijay sir from Jaipur as a resource person. We are conducting this program under birth centenary celebration of Dr. D.P. Khandelwal sir, who is renowned physicist and had worked very enthusiastically for the enhancement of physics. Now, to welcome our respected guest, I would like to invite Dr. Anjan Naidu sir to give bouquet to Dr. Abha Khandelwal ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now, I would like to invite Dr. S.K. Paliwal sir to give floral welcome to Dr. Anjan Naidu. Thank you, sir. Now, I would like to request Dr. D.S. Chaudhary sir to welcome Dr. S.K. Paliwal. Thank you, sir. Thank you, all respected guests. Now it's time to listen. The motivator, the guide, mentor, best speaker, and the captain of the ship, none other than our beloved principal, respected Dr. Anjan Naidu sir. I humbly solicit Dr. Naidu sir for introductory remark of this. Good morning, all of you. Dignitaries present as Madam Khandelwal, Professor Khandelwal, Dr. Dilip Chaudhary, and the HOD of the department, Professor Paliwal, all the faculty members of physics department, other departments also, the coordinator of this program, Anand More, and my dear students. First of all, I would like to give my sincere thanks to Khandelwal Madam for organizing this program. You must know that Khandelwal Madam was a faculty member of this college, I think in the year 81 to 82. In fact, I was a student at that time. So, Madam looks very young, but don't feel that she is very experienced. And retired professor from Histoire College, Computer Science. She did a lot of in the Computer Science department. I worked with her in the Board of Studies of Nagpur University also in the Computer Science department. Very particular, very strict, and very, up to the mark when the confidential work comes into the account. So thank you for being here. Hello.
Hello. Yes. This is a kind of program where I should say about the background of this program, why this program has been organized. There is one organization that is All India Physics Teachers Association, whose founder president was Dr. P.P. Khandelwal. And today we are celebrating the birth centenary year of Sri Khandelwalji, late Khandelwalji. So we should offer tributes by paying this, in conducting such programs to him. Similarly, the president IAPT, Dr. P.K. Ahluwalia, he's the president. I mean, at present, he's the president of this association. Very soon, Professor Y.K. Vijay will deliver a talk as a resource person on this program. D.P. Khandelwal, Abha Khandelwal, madam, she is a coordinator for conducting this program throughout Vidarbha. I think in 3-4 colleges, she has conducted this program very successfully. People were very happy. Students were benefited out of this program. So, in this program, the resource person particularly say about the physics, innovations of the physics, and they have one concept. Hello. That physics language or physics is a science which should be, you people, physics people, particularly the present, the persons present over here on the dais, should take this physics subject to the general masses, general students. A lot of research work is there, lot of publications are there, scopus generals are there, but those are restricted to the academicians and those who know the physics very well. Myself, I'm also a man of physics, maybe partially, but I don't want to go through into the details of the physics, Hello. which is published, the papers, so many papers published in the journal. What the common people know, if you are traveling in a bus, driver apply the force, your body will fall upward direction. Why? Because you don't know. When you roll any chalk in the inclination, it will incline by its own, and after some time it will stop by its own. What is the reason? People don't know. So these are the concepts. Not many concepts in any other type of lecture. I will give such examples. Thousands of examples where students don't know what is the application of the physics. So this is a noble cause. Very soon, we would like to establish one laboratory where some, I think, practicals will be established. I don't know what are the models with her. She will explain. So I'm interested to establish such lab which is open for the common people, common students to understand physics very well. Thank you very much again, madam, for being here. And I hope that the students will enjoy the lectures by sir, I think Vijay sir. Vijay sir. Thank you very much. And we should give a clapping to Abha madam for that. Thank you very much, sir, for your enlightened speech. Now, I would like to request Dr. Abha Khandelwal ma'am to give a memento in memory of this program and from IAPT Nagpur chapter to Dr. Ranjan Naik. Thank you. Today, we have Dr. Abha Khandelwal ma'am, who is now working as Principal Guru Nanak Public School and ex-HOD of Department of Computer Science, Hislop College. She is well-known academician and works in the area of physics as well as computer science. And she is having a very vast experience how to deal with this particular kind of situations. Now, as I have told you,
it's a world of technology, and we are moving towards that technological world. So we have to accept some challenges, and we have to groom ourselves in the according situation. So without wasting much time, I would like to request Dr. Khandelwal ma'am to enlighten the memories of Professor D.P. Khandelwal sir and legendary physicist and introductory remark, introductory speech of IAPT. Thank you. Respected Principal Dr. Ranjan Naidu, Hello. Head of the Department of Physics, Dr. S.C. Paliwal, Dr. D.S. Chaudhary, Convener Dr. Anand More, staff and dear students. A very good afternoon to all. Didn't have lunch. Sure you didn't have, but still, you are from physics and physics is all about energy, so come on. Once again, good afternoon, friends. Yes, like that. I would like to make one correction before starting my introductory remarks and to Dr. Hello. Professor D.P. Khandelwal, that I am not principal of Guru Nanak Public School. Hello. Actually, I am enjoying my retirement and I love being with the students. I love whatever Hello. I love, I go ahead and take that project in hand and I go for it. So now, if you two please, will you please run presentation for Professor Dr. D.P. Khandelwal? A voluntary organization, Indian Association of Physics Teachers, which in short is called as Hello. IAPT, was established in the year 1984 by the great visionary Professor Dr. D.P. Khandelwal. Hello. To improve and upgrade the quality of physics teaching at all levels, starting from primary to middle school, high school, UG, PG, and Hello. to the research level. They conduct seminars, conferences, examinations, laboratory workshops, competitions for teachers and students. And moreover, they conduct science stage show. So many students have joined physics. They continued with physics subject because they attended this science stage show and they were so much impressed by it. Today we are here, all of us, to celebrate birth centenary celebration in the honor of Professor Khandelwal at DB Science College, Gondia. We celebrate the life of a person who devoted his life for education and social reforms. Professor Dayapathy Khandelwal, he was a renowned physicist across the globe, a freedom fighter, poet, and revolutionary. In short, he was a multifaceted person, a passionate lover of physics, and a compassionate, enthusiastic, and above all, an encouraging teacher. He was born on 1st October 1921 Hello. in Udaipur, Rajasthan. He completed his schooling in Dungarpur in Rajasthan. He did his schooling in at high level. He did his schooling in Udaipur, then his PG, UG in Ajmer, all in Rajasthan, and then he moved to Agra for doing his PG. He did his research at Nainital, and during his research, he had developed all his equipments by himself, including the florimeter, which was recognized by abroad also. So passionate about the teaching in physics, he did not join Indian Civil Services. So although he cleared that exam, he had a great opportunity. It was a great respectable post, but because he loved teaching, so he decided to become a lecturer. He taught in various colleges during the flag end of his career.
He joined Pune University and Emeritus Fellow in UNESCO project titled University Foundation Course in Modern Physics in 1993. IAPT conducts various examinations, national standard examination in physics, chemistry, biology. You will also come to know more about it during the address of IAPT President Professor P.K. Alwanda. To mention Parag Agrawal, the current CEO of Twitter, the gold medalist in 2001 International Physics Olympiad. IPT has now grown into a major organization with, here it is written 6,500, that is typographical error. It is 10,000 live members and 1,500 organizations throughout the country. Some pleasant and unforgettable memories you can see on the screen. Sir, please scroll the screen. Next slide. Okay, it's okay. Then you can run my PPT. We have lot to go, sir. Doesn't matter. Please run PPT number 4. You can close this and go for PPT number 4. Yes. So now we are paying tribute to, let's stop. And we will run PPT and just at a glance you can see it. They are not with you. So tribute to scientists who work fondly and tirelessly for uplifting physics education in India. And you know, popularly many call him as a father of experimental physics because his vision was that you learn by doing. When you do something, then you can learn it in a better way. Now physics is everywhere, all around you. Just turn your face, like this, up and down, right and left. You will feel that yes, physics is everywhere. So next slide. So you can see light, sound, heat, force, friction, inertia, electricity, magnetism, gravity, atoms. Everywhere there is physics. So you cannot live without physics, and you should be proud of having taken up physics as one of the subjects. And if PG students are there, then they are totally devoted to physics. Generations ago, numerous aspects of natural world were occurring, and they were considered as a miracle. People used to say, like solar eclipse, it's a miracle. Next slide, sir. Solar eclipse, it's a miracle. Hurricane, it's a miracle. People used to think like that, but now they are thoroughly understood in terms of physics and other sciences. They have been, all the phenomena have been very well explained. Today we are living in a digital era. I hope all of you agree with me. I am not telling this because I am from computer science fraternity. Actually, I am a physicist, and by heart still I am a physicist. When I was teaching in junior college, so after my marriage, I got shifted to junior DB science, Gondia, and here I joined junior college, and I was teaching physics in junior college from 1981 to 83. Then what happened that while doing practicals, even in my student life, there is some standard error, and that error we approximate. So we write a tilted line and then draw a straight line. So it is never true. That figure is never true. It is approximate because of certain environmental reasons. There are some errors, and therefore while doing experiments, you do not get the proper value which we learn in theoretical physics. And when I used to do experiments, and when I, even after taking readings, observations carefully, and then
there was no mistake in calculation, but while drawing inference conclusion, I used to get very much disturbed, and I used to fight with my physics teachers that you sit in front of me and see I have taken all the observations correctly, even I am not getting the answer which you taught us that this value will be this in the range of this, and still I am getting not getting in that range. It is little bit here and there. And they used to tell me, Abha, you have understood the concept very well. You have done experiment correctly. Don't worry, nothing will happen. And then they used to divert my attention. Go help that student. She needs your help. And you know, no? Sharing is caring. So if you share something, your knowledge will upgrade it. And it's always, if you are a caring person, definitely you will go ahead with that. So I used to get diverted. But later on, perhaps I realized that computer science, it is always, if yes is yes, no is no, this answer means this is the answer. It's your fault if you are not written a correct program. So it will yield the result, whatever you have written in the program according to that. So computer is very true thing. It has no shayad, no perhaps. Yes means yes and no means no. So maybe because of that, I got fascinated towards computer science and then joined the computer science fraternity. And from there onwards, I am with computer science. I taught as I was head of the department at Islam College for last 27 years, and then I got retired. Now, uh, while talking about the digital era, I can really see that there is going to be a drastic change. I can clearly see it. The computational physics will make its room amongst physicists. And hence time has come to include, because dignitaries, educationists are sitting in front of me and also on the dais, and they have joined us also. So what I want to put this burning issue in front of that time has come to include computational physics in educational system. Possible applications where you can apply computational physics is astrophysics, astronomy, computational plasma physics, high energy physics. That can only be done with computational physics. Very difficult to perform experiment in high energy physics. Atomic and nuclear physics, applied mathematical physics. Quantum computers will definitely change the fundamental way to ramp up the computation and studies of complex systems. So days are in coming days, we will, once the quantum computer takes its place, we will see drastic, totally different scenario in education field. Now, when I was discussing this with Professor Aluwalia, I said that at least maybe not in primary school, may not be in middle school, or UG students, at least it should be implemented for PG students. He disagreed with me. He said, Madam, I don't agree with you. It can be and it should be implemented at the school level. Then I started thinking that why did Sir say so? Because my thinking was that the experiments are not too costly for 11th and 12th for school level, but at higher level they become very costly. So computational experiments will definitely help the students to do experiment, to perform experiments, practicals. But then I realized that it's true that the fun and joy of performing experiments with our own self cannot be gained with computational models. Isn't it? When we do something with our hand, we are doing it. We are in touch with the equipments and we are doing something. We are taking the reading and then we are getting some output, then we are doing analysis and all that stuff. Fun part of physics, doing experiment classes were really very interesting. And I hope now, still now, they are very interesting. But with computational physics, what you can do, what school students or junior college students can do, the lab is not available for 24 hours. But the computational model for performing practicals will always be available with you. Instead of chatting and sitting on stairs or in garden, instead of chatting and doing ding, 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 you can always play with your computational
experiments and you can understand the concept, you can read on it, that how you got it, how it happened and all that. So you can clear your concepts at that level. Now, with this, I thank Principal Anjan Naidu sir. With a very short notice, he has arranged such a big program. I am really thankful to you, sir, because it means different. I mean, in virtual, I can't interact with the students. I can't see their faces. So one-to-one interaction. Which is those who are really not able to join us personally, they are sitting at Jaipur. Then our digital media is always there to help us. So nowadays, we should have a hybrid meeting. And over to Hello. Audio is not coming.
Hello. You're not audible, sir. Now it is audible. Hello. 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 No, I can't hear you. Yeah. I can. Hello. I can't hear the speaker. I can hear you who is calling. I don't know. Alwalia sir? नहीं. We cannot communicate. मुझे भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है सर. हाँ अभी ठीक है. मैं तो सुन पा रहा हूँ तो मगर ये वीडियो जो चल रही है वो सुनाई नहीं दे रही है. ओके. बिल्कुल। अभी सुनाई दे रही है. अपनी आपस में कम्युनिकेशन हो गई. वो हो गई। आपस में हो गई बट ऑडियो ऑफ द वीडियो इज नॉट देयर. ओके. ऑडियो है, स्पीकर का ऑडियो नहीं सुनाई दे ऑडिटोरियम में दिख रहा है, सुनाई दे रहा है. रहा। ऑडिटोरियम में सुनाई दे रहा है आपको. ओके ओके. Your voice is clear here. विजय सर. हाँ मेरा ठीक है. आपका आवाज हमको आ रहा है सर, क्लियर है. ओके ओके. अलवालिया सर का मेरी वॉइस आ रही है. 1 minute sir, 1 minute. Okay. Just 1 minute. हाँ आपकी अलवालिया सर हमें आ रही है. चलिए. सर आप लोग की आवाज आ रही है. ओके. बट ये जो वीडियो की आवाज हमको नहीं आ रही है. सर कोशिश कर रहे हैं पर अभी वीडियो आधा हो चुका है तो शैल वी कंटिन्यू. तब तक ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को भी आ जाए. बट यू बोथ ऑफ यू आर ऑडिबल टू अस. So continue so that audience is able to listen. Continue. And audience are also able to listen your talk. अभी चालू करो. So shall we continue, sir? Yes, ma'am. Yes. Can you hear?
ऑडियो शायद हॉल में सुनाई नहीं दे रहा है। स्पीकर हैं, उनकी लिप मूवमेंट दिखाई दे रहा है और आवाज नहीं सुनाई दे रही है। आवाज नहीं सुनाई दे रही है। सो आप सर से डायरेक्ट फेस टू फेस कर लीजिए, दैट इज बेटर। यस सर, यस सर। हाँ, अपनी रिकॉर्डिंग की जगह डायरेक्ट बता सकते हैं। जी 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 सर, इट विल बी वेरी pleased moment if Dr. Sir is live and will be delivering his lecture here. So please sir. आलूवालिया सर जी, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं, आपका वीडियो शायद नहीं चल पा रहा है। okay, okay. So good afternoon. Yes, good afternoon. Am I audible? Yes, now you are audible. Audible Yes, to sir. everybody? Audible to everybody? Me, yes. In a What hall? about the auditorium? Yeah. I am audible at the auditorium sir. also. Audience, please raise your hands. I can see you. Am I audible? सुनाई दे रहा है आप लोगों को? हाथ Please हिलाएं। raise your hands. Yes sir. Audience. Hello. ऑडियंस का रिस्पांस नहीं है। Yes sir, we are getting your voice. Okay, please raise your hand. Am I audible? Audio, yeah, I am audible. Okay, okay, thank you. Audience, correct now. Audience has raised their hands. Students, so sir, please continue. Please continue. Okay, so good afternoon. I am very happy to be part of this DP Khandelwal's birth centenary celebrations, and I congratulate the management for holding this particular program. IAPT is an organization which is the result of a very broad vision provided by Professor DP Khandelwal to raise the quality of physics education in the country. And in the last almost 40 years, what we have seen is that IAPT has made an impact in various aspects of physics and physics education itself. We have a very large life members across the country, around 10,000. And Maharashtra's regional council is in fact one of the most active regional councils. I'm also delighted to know that Madam Abha Khandelwal has been instrumental in organizing this particular program and bringing in Professor Y.K. Vijay also to share with you his very special innovation hub experiments. I know that technology has lots of problems. When you need technology most, it may ditch you. So this is exactly what happened today. So don't worry about that. It is part of the game. But I would like to send you just one message, dear students. And that message is that there is a career in physics also. Sometimes people think that if we will do physics, what will ultimately will be our career path. Let me tell you that once you are trained in physics,
it is not only physics in which you can work, you can even work in very many other areas also, which are using the kind of training which you get in physics itself. The best part of the physics training is that you become problem solvers. And becoming a problem solver is, I think, one of the key things to succeed in life itself. Physics is being used not only in doing basic science research, but it has, whenever come out with a new discovery, that has changed the world. Transistor was one, it has changed the world. Integrated circuits was another, it changed the world. Even World Wide Web, I don't know whether you know that or not, was a creation of a particle physicist in CERN physics lab. And he is the man who visualized how, with the help of, we can network. And what we are doing today is participating in that kind of a networking process itself. So I once again pay my homage to Professor D.P. Khandelwal, who was instrumental in bringing us together, work on same platforms, and inspiring us to create such things as you are going to see today with the presentation of Professor Y.K. Vijay. Once again, I thank Principal Saab also and the management also for organizing this program. Thank you very much. We are sorry for voice. There is a problem here because of network issues. But our students got your message clearly, and hopefully we will be benefited from it. Thank you, sir. Now, Thank you. we are moving to the next session of the program, and for this, we are having the guest speaker, guest resource person, and the resource person is Professor Y.K. Vijay sir, Director CIST, IIS University Jaipur. It's a great pleasure that sir is with us. Provide us his expertise and lab experience. For introducing him, I would like to invite Dr. P.K. Nagpur. P.K. Nagpur. Good afternoon to all the dignitaries present online and offline, all the respected faculty members and my dear students. I am Dr. Preeti Nagpur, Assistant Professor in Physics, Integrated Science College, Noida. I am here to give the introduction of Professor Y.K. Vijay sir. Professor Y.K. Vijay sir is a Director CIST, the IIS University Jaipur. He is ex-director of CGP University of Rajasthan Jaipur. President of IAPT RC 6 Rajasthan, ex-president Vivekananda Global University, Jagatpura, Jaipur. Professor Y.K. Vijay received his MSc degree in physics and PhD degree from University of Rajasthan, Jaipur in 1975 and in 1980 respectively. He was awarded Commonwealth and ICTP fellowship and spent 1 year in Upasana University. Physics, Director, Department of Physics Education and Center for Non-Conventional Energy Resources at University of Rajasthan, Jaipur. Professor Vijay has co-authored over 3,000 research articles in referred journals. Citation is over 3,500 and H index is 30, and over 150 research papers in conference proceedings. He has delivered over 100 invited talks and has co-authored 2 books on basic and semiconductor physics. He has guided 40 PhDs and advised numerous masters and undergraduate research projects. His professional awards includes IU Advanced Young Research, R.K. Ramanathan, IAPT Teaching Aids Award. He has also developed electron-positron accelerator, XRF CVD, and positron lifetime spectrometer. He has been spent 33 years in teaching and research field of semiconductor, thin films, and nano
projects for organic photovoltaic cells, design and development of CMTs, polymer composite-based gas sensors, and gas separation filters. He is also studying photonucleases and non-linear optical properties of nanoparticles through polymeric composite. He is vice member of IAPT, APS, MSI, IAPA, RAPT, MRSI, and president of IAPT RC6 as well as Rajasthan chapter of MRSI. He has initiated a mission to set up innovation hub at Science Gallery to learn basic science principles all over the country. Up to till date, he has set up 155 labs. So I welcome you, sir, on behalf of Dubai Science College. Thank you. Thank you very much, ma'am. And as ma'am had rightly said, we are having a legendary speaker and resource person with us. So without wasting it, I to invite Professor Y.K. Vijay sir for our virtual tour to Innovation Hub. Over to you, sir. Yeah, thank you. Thank you so much. I like to share my screen with all of you. First of all, thank you, Abhaji, for giving me this opportunity. And I am lucky that I have worked with Professor D.P. Khandelwal when he was with the University of Rajasthan during 1977 to 78 when I was doing my PhD. So I have learned a lot by interacting with him, and all my education and my development has gone with the theme of Professor D.P. Khandelwal, to learn science by doing. So I'll be explaining most of the concepts which are there in Innovation Hub dedicated to Professor D.P. Khandelwal. I'm ready to share my presentation. How do I go? Okay. My presentation is here. Can you see my presentation? Hello. No, sir, not visible now. Share करिए. शेयर किया, दोबारा से करूं? वेल, शेयर लाइव करूं क्या? नहीं नहीं, शेयर स्क्रीन करिए. डेस्कटॉप शेयर करूं? Is it there now? Can you see? No, sir, no. No. So no, but to me it is showing sharing. मोबाइल पे दिख रही थी. दिखने देखिए. हाँ सर, मोबाइल लो से देखिए. I have to be host, or how do I stop sharing? Okay. I have to come in main display, then I can share. Okay. Can you see? Can you see now? Is it visible? Is it visible? उसको अभी पिन है ना सर, पिन ही है. Visible है?
Is it visible? और एक मिनट बंद करके शेयर विजिबल इस पे नहीं, इसमें नहीं है सर, लैपटॉप में नहीं है। नहीं मेरा स्क्रीन विजिबल है मीटिंग में। Screen visible है। विजिबल ऑन मोबाइल। प्लीज सर once again you just share it. अभी बंद करके फिर से शेयर करके। ओके, अभी दोबारा शेयर करूं? ओके, is it sharing? No Is sir, it not visible. not visible? Okay, I'll stop. Share. So which screen I should share? Entire screen. Entire screen. Okay, so include audio. All right. Now No sir, no, no, नहीं दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा है। ओके, अभी ये मीटिंग वाला है मेरा, ठीक है। इसी में एक खाली आ रहा है टू शेयर द ट्रे। इफ आई डू द शेयर द ट्रे, डेस्कटॉप करूं या विंडो करूं? डेस्कटॉप करिए सर, डेस्कटॉप करिए सर। डेस्कटॉप करूं। इंक्लूड ऑडियो, डेस्कटॉप। अभी अभी आता है? अभी अभी आ रहा है? नहीं सर, नहीं नहीं है। ओके, तेरा ले मेरा। जॉइन कन्वर्सेशन करूं? करिए सर। नहीं जाता है। नेटवर्क भी चेक किया, नेटवर्क भी चेक हुआ, बंद करके फिर से लॉगिन कर। नहीं हो रहा। आता है because I can see you, you can see me, all right, and to me only one is which is coming. हेलो, अभी अभी sir, है? can you mail your PPT? सर आप PPT मेल कर देंगे? पीपीटी सेंड कर देता हूं या ठीक। किसको सेंड करूं? व्हाट्सएप पे कर दीजिए। किसको? अनिल मुरे? आनंद मोरे। आनंद मुरे, ओके ओके ओके।
उसमें वीडियो भी होंगे, वो डिफिकल्टी है। वो रिकॉर्डिंग करेंगे, रिकॉर्डिंग बंद करेंगे, वो आता है रिकॉर्डिंग आप कब करेंगे? ये मेरा स्क्रीन तो दिख रहा है आपको? हाँ जी सर, स्क्रीन दिख रहा है तो ये प्रेजेंटेशन क्यों नहीं जाता है? स्क्रीन दिख रहा है आप वीडियो ऑफ कर दीजिए, वीडियो ऑफ कर दीजिए। सर। आप एक ट्राई कर सकते हैं, वीडियो ऑफ करके शेयर शेयर कर सकते हैं एक बार। वीडियो ऑफ करके शेयर करूं? ओके, मेरा वीडियो ऑफ करें, टर्न ऑफ द कैमरा। स्टॉप शेयरिंग। अभी मेरा वीडियो बंद है, फिर भी आपके यहाँ दिख रहा है? नहीं, अब नहीं दिख रहा। अब नहीं दिख रहा? अभी? हाँ, अभी इसमें शेयर द स्क्रीन, इसमें नहीं है। अभी प्रेजेंटेशन आ रहा है? हाँ, मोबाइल पर। सर एक मोबाइल पे आ रहा है, पर स्क्रीन पे अभी नहीं आ रहा है। स्क्रीन पे नहीं जा रहा है? अभी? नहीं सर, आपका वीडियो चालू है, जो आ रहा है, लेकिन ये नहीं है। आप करके शेयर करेंगे सर एक बार। well, मैं वीडियो शेयर करता हूँ। आभा जी को कर दूं क्या? यस सर, यस सर। आभा जी को कर दूं हाँ चलेगा सर। या मोरे? अनिल मोरे जी को? ओके, हाँ सर, आनंद मोरे जी को। आई हैव डन आनंद अ मोरे। व्हाट्सएप। हाँ सर। इज इट विजिबल? जस्ट मिनट। आप इसको प्ले कीजिए, देखें। स्क्रीन ऑफ कर देते हैं। इसको ऑफ सकते हो। डिस्कनेक्ट। वो इनोवेशन हब के टूर का वीडियो है, हाँ सर। प्ले हो रहा है। सर आपने शेयर करा है क्या वीडियो? हाँ, वीडियो शेयर किया मैंने आपको। नहीं, रिसीव नहीं हुआ सर। नहीं हुआ है? आनंद मोरे सेंड दिखा रहा है। अनिल मोरे? हाँ? आप आभा जी को आभा जी को डालता हूँ। आप इसको लॉग आउट करके किसी टाइम के लिए ड्यू करिए। आभा जी को भेजा है। आभा जी के पास आ गया है।
Am I visible to audience? Hello. Sir, your PPT is visible now. PPT is visible. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Then let me minimize it. Can I go to the next slide? Yes, yes. Is it visible? Yes, sir. Yes, good. Thank you. The technology, we are there. This sir. Yeah. So देखिए, we are celebrating the centenary year of Professor D.P. Khandelwal. So who is Professor D.P. Khandelwal? ठीक है ना? यदि हम कंपेयर करें तो अभी ये 21 से 30 हम क्वांटम साइंटिस्ट की सेंटेनरी भी सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड प्रोफेसर डीपी खंडेलवाल की सेंटेनरी भी सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो क्या हम सीवी रमन साहब का नाम जानते हैं? एवरीबडी. मेघनाथ शाह का नाम जानते हैं और एसएन बोस का नाम जानते हैं. काफी बड़े आदमी थे ये लोग. रमन साहब को नोबेल प्राइज मिला. मेघनाथ शाह ने जो काम किया वो आज भी जाना जाता है कि सूर्य से प्रकाश कैसे आया. और ऐसे ही एसएन बोस भी उसी समय के लोग हैं जिन्होंने बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स की खोज की. आज भी यदि कोई नया पार्टिकल डिस्कवर करता है तो उसको बोसोन के नाम से जाना जाता है. तो हमारे जो डीपी खंडेलवाल हैं, ओके, वो भी इसी समय के फिजिसिस्ट हैं जो कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स उसको लीड करते हैं. उनके ही मार्गदर्शन से और इंस्पिरेशन से हमने इनोवेशन हब बनाई एंड कंट्री में, थ्रू आउट द कंट्री, हम साइंस को इस तरह से सिखाना चाहते हैं. ऐसा मिशन उन्होंने दिया. तो मैं वीडियो प्ले करता हूं. ये सेंटर फॉर इनोवेशन इन साइंस टीचिंग है जहां ये इस तरह की लेबोरेटरी है. एंड आप देखेंगे कि यहाँ तरह तरह के एपरेटस है. गाड़ी का टायर है, ट्यूब है जिसमें पानी भरा हुआ है और उस पानी में बच्चे खड़े हुए तो वाटर लेवल ऊंची नीची होती है एंड वी कैन मेजर द वेट ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स. तो इसको हम बोलते हैं इनोवेशन हब. यहाँ पेंडुलम्स लटके हैं अलग अलग लेंथ के. इनको यदि एक साथ चलाएं तो उनसे डायनेमिक्स दिखती है. यहाँ कोई लूप्स हैं, कोई ढोलक है जिसको बजाने से साउंड चलती है. यहाँ एक एयर ट्रैक है जिससे मोशन की जानकारी. इस ट्यूब में हवा और मैग्नेटिक इंटरेक्शन से चलता है. ओके. यहाँ पंप भी है, वैक्यूम पंप. यहाँ वाटर ट्रे है. यहाँ बॉल्स है जिनमें मैग्नेट लगा हुआ है. मैग्नेट सस्पेंड कर रखे हैं. ओके. सो इनोवेशन हब इज बेसिकली अ प्लेस ऑफ इंडिपेंडेंट लर्निंग. बॉल है तो उसको गोल आप घुमा के देखिए तो वी हैव डिजाइन अ मॉडल जिसको ब्लैक होल का मॉडल बोलते हैं. ओके. कपल ऑसिलेशन का मॉडल ये इस तरह से बनाया कि एक स्ट्रिप के ऊपर मास रखा,
और एक से दूसरे में एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। यहाँ 10 पेंडुलम लगा रखे हैं अलग अलग लेंथ के। इनको एक साथ चलाओ तो थोड़ी देर एक साथ चलते हैं और थोड़ी देर बाद इनमें आपस में फेज डिफरेंस आ जाता है, जिसके कारण ये स्नेक जैसा मोशन नजर आता है। ओके, तो इनोवेशन हब में और भी साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन, जो मेघनाथ शाह है, चंद्रशेखर है, सीवी रमन है, इन सबको हमने डेपिक्ट कर रखा है। ओके, तो इनोवेशन हब क्या है? एक विद इन ए स्कूल और विद इन ए कॉलेज एक इंडिपेंडेंट प्लेस ऑफ लर्निंग है, और इस प्लेस ऑफ लर्निंग में सारे साइंस के प्रिंसिपल हम खेल खेल में सीख जाते हैं। ओके, दैट इज द थीम। तो हम डीपी खंडेलवाल साहब ने जो बोला कि फिजिक्स थ्रू एक्सपेरिमेंट, हम एक्सपेरिमेंट करना चाहिए जिससे हम फिजिक्स सीख पाते हैं। ओके, एंड इसी वजह से हम इनका सेंटेनरी ईयर 1921 से 20 से लेके 2022 साल भर तरह तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं और लोगों में इस तरह का अवेयरनेस डेवलप कर रहे हैं। एक इनोवेशन हब जैसे हमने हिमाचल में लगाया, तो देखिए किस तरह का इनोवेशन हब लगता है। ये इस तरह की पूरी लेबोरेटरी ऑल टुगेदर एक हॉल के रूप में बनाई इन्होंने। ओके, एक गवर्नमेंट स्कूल है, मॉडर्न हायर सेकेंडरी स्कूल, और ये सारे जो एपरेटस हमने यहाँ आपने देखे इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट, ये सारे के एक मॉडल यहाँ लगाए हुए हैं। ओके, एंड साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन भी पोस्टर्स के रूप में लगाया हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं इनोवेशन हब। ये सब खेल खिलौने हैं, साइंटिफिक टॉय है। तो ये जो खिलौना है इसमें ये अभी आपको दिखाया था स्नैक पेंडुलम। ओके, ये एयर ट्रैक दिखाया था, ठीक है ना। तो ये सारे एपरेटस हम डुप्लीकेट करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और एक तरह से एक नई लैब बन जाती है ऑल टुगेदर। वी कॉल इट एज ए स्वराज लैब। इंडियन एनवायरनमेंट में बच्चों के लिए बहुत ही पॉपुलर सी चीज़ों से पूरी लैब बनाई हुई है। ये इस तरह का झूला भी लगाते हैं, ठीक है ना, पूरी सिस्टम से बच्चे बैठ के इसमें झूल सकते हैं। एक स्क्रीन लगाते हैं जिसमें एयर कैनन का एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज ए इनोवेशन हब। मैं कुछ एक्सपेरिमेंट क्विकली आपको, जैसे एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वांडरवाल पोटेंशियल क्या है, लेटिस पोटेंशियल क्या है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग क्या है, रमन इफेक्ट क्या है, इन सब के साइंटिफिक मॉडल्स बना रखे हैं। अब जैसे ये साइंटिफिक मॉडल है, इसको समझाता हूँ। तो ये बॉल है, इसमें मैग्नेट लगे हुए हैं, इसलिए आपस में छूती नहीं है। तो एटम भी इसी तरह से होते हैं। अब इसको चला के देखो तो आपको पता लगता है। Atomic configuration, we have got a model in which the ring magnet is attached on each ball with identical polarity of north-south, so that the dipoles are interacting. The balls are able to float on a surface of water, and they arrange themselves in a particular configuration. 7 ball with hexagon symmetry, 5 ball or 6 ball with pentagon symmetry, and when there are 4, they result into a cubic symmetry. If there are only 3 balls, they are having a triangular configuration. So the atomic configuration is also similar to the spherical atoms, having interaction, van der Waals interaction, and organize themselves in different fashion when they are repelling each other. अब जैसे हमने कहा कि साहब एटम्स पास पास रहते हैं। ओके, तो जब एटम पास पास रहते हैं तो 3 स्टेट होती है मटेरियल की, लिक्विड, सॉलिड और गैस। राइट नाउ हमने लिक्विड जैसी गैस देखी या एटम दूर दूर देखे, लेकिन जब एटम पास पास इकट्ठे हो जाते हैं तो क्रिस्टल्स बन जाते हैं। और क्रिस्टल यहाँ
क्यूबिक सिमेट्री है या हेक्सागन सिमेट्री है, इस तरह से पॉलीक्रिस्टल मटेरियल बनता है जिसमें डिफेक्ट्स भी होते हैं। ओके, तो एटॉमिक अरेंजमेंट इज विद डिफेक्ट्स, ओके, जो इस तरह से नजर आता है। ठीक है, तो दीज आर ऑल वर्किंग मॉडल्स। अब जैसे ये पेंडुलम है तो वांडरवाल फोर्स इस पेंडुलम से नजर आ जाता है। ओके, इसको चला के देखें। We have a small bar pendulum in which there is a gravitational force of attraction at the center, but there is a repulsive force of magnetic interaction that results into a van der Waal configuration, and it comes in equilibrium at certain distance. Yes. When you release it, तो वांडरवाल थ्योरी के हिसाब we से have a हम कहते हैं कि एटम्स इस तरह का पोटेंशियल होता है सिंगल एटम का, और दो एटम पास पास आ जाएं तो पोटेंशियल इस तरह का हो जाता है। ठीक है ना, तो इसमें बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ, और यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दिस इज अ बुकिश नॉलेज। अब यदि लेबोरेटरी में जाएं, ओके, बहुत सारे एटम हो, ठीक है, तो वी हैव गॉट फ्री इलेक्ट्रॉन एंड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एंड बाउंड इलेक्ट्रॉन, ये सारे थ्योरेटिकली किताबों में लिखे हैं, बट लैब में ये इस तरह का मॉडल रहता है। ओके, यहाँ दो मैग्नेट लगाए और एक बार पेंडुलम, अगेन इसमें मैग्नेट लगा हुआ है। अब देखो किस तरह से चलता है। van der Waal potential is found in crystals. In order to represent that, we have a oscillating magnet between two permanent magnets. So sometimes it finds the kinetic energy is not enough to cross the potential barrier, then it is trapped close to one of the atom magnet. It can be trapped in a magnet, one magnet or another magnet. Okay, shows a bound electron, and once it is has enough energy, it shows a continuous. तो ये लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट ऐसे होने चाहिए कि आसानी से बना सको और वो नेचुरल साइंस के फिनोमिना को दिखाएं। अब जैसे कपल ऑसिलेशन है, ओके, एक एटम दूसरे एटम के पास आता है तो वो आपस में अट्रैक्ट भी होते हैं, रिपेल भी होते हैं। इस तरह का मॉडल हमने मैग्नेट से बनाया। अब ये देखो किस तरह से चलता है। आप इसको डिस्टर्ब करो तो ये डिस्टर्बेंस एक दूसरे में जाता है तो वो खुद रुक जाता है। ओके, तो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल साइंस। ओके, ये एक दूसरा मॉडल है, इसमें हमने 5 लगा रखे हैं रिंग मैग्नेट। ओके, इनको चला के देखिए। एक को डिस्टर्ब करो तो डिस्टर्बेंस आखिर तक पहुंच जाएगा, बट उसकी देर लगती है, वहां से वापस लौट के आता है डिस्टर्बेंस। ओके, दिस इज कॉल्ड एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर विदाउट कांटेक्ट। तो हम कहते हैं कि मटेरियल के अंदर एटम्स van der Waal फोर्स से जुड़े रहते हैं, दे डू नॉट टच ईच अदर। वो कॉन्सेप्ट हमें इस तरह से नजर आता है। इस तरह से अनहार्मोनिक ऑसिलेटर का कंसेप्ट में F इज इक्वल टू -kx, ये हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है। दिस इज अप्रोक्सीमेशन, बट रियल में इट इज नॉन लीनियर अनहार्मोनिक ऑसिलेटर। और ये डायनेमिक्स हमें तब पता चलती है कि एक बार पेंडुलम में ग्रेविटी के कारण तो ये चलता है, बट इसमें मैग्नेट और जोड़ दो, ओके, तो इसका मोशन किस तरह से होता है वो आप देखेंगे तो पता चलेगा। We have modified a bar pendulum in which the restoring force is due to gravity as well as the magnetic interaction. At the bottom of the bar, we have a magnet oscillating with respect to a fixed magnet on the table. The resultant motion is that it is an anharmonic oscillator because the restoring force इज ए नॉन लीनियर। ओके, ये तो ग्रेविटी के कारण है और ये है मैग्नेटिक इंटरेक्शन के कारण m1 m2 by r²। ओके, इस वजह से
यदि काइनेटिक एनर्जी काफ़ी नहीं है तो इट कैनॉट क्रॉस द बैरियर। ओके, मैग्नेटिक ऑसिलेटर को यदि अलग से देखें तो इसकी डायनेमिक्स देखिए। ये पेंडुलम बिल्कुल मैग्नेटिक अट्रैक्टिव फोर्स से बिल्कुल टाइट रुका हुआ है, लेकिन इसको यदि हम डिस्टर्ब करें तो पता लगेगा किस तरह की In this डायनेमिक्स। model, we have got a bar pendulum with strong attractive magnetic interaction at the bottom, shows a very good character of a harmonic oscillator. When the amplitude of oscillation is large, the time period is also large, but as the amplitude reduces, the time period also decreases very rapidly. It shows an harmonic oscillator potential. It's basically the magnetic interaction dominantly and a little bit gravitational interaction. Both are ये जो हम नेचर के अंदर दरअसल बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बट एट द सेम टाइम जो क्वांटम फिजिसिस्ट है जो बारीकी से देखते हैं चीज़ों के को, तो वो कहते हैं कि सारी दुनिया एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और उनमें आपस में कैसी बात होती है उससे चलती है। तो रमन का जो बेसिक काम था कि फोटोन किस तरह से एटम से इंटरेक्ट करता है और एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, कलर चेंज होते हैं, वो सारा काम था। जो मेघना शाह का काम था कि फोटोन कहाँ से उत्पन्न होते हैं, जैसे लाइट से, तो लाइट का सोर्स कैंडल भी है, बल्ब भी है, तो उसमें एटम यदि एक्साइटेड होते हैं तो फिर वो लाइट देते हैं। तो सन के ऊपर इट्स अ परपेचुअल सोर्स ऑफ एनर्जी, हर एक चीज़ प्लाज्मा स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट में है, और वहाँ से जब डी एक्साइटेशन होता है तब फोटोन निकलते हैं। ओके, तो एक रेजोनेंस फिनोमेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्रीक्वेंसी किसी भी फोटोन की उस इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी के क्या बराबर हो सकती है। दिस इज व्हाट इज अ रेजोनेंस कंसेप्ट। ओके, तो रेजोनेंस कंसेप्ट देखने के लिए हमने एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के ऊपर रखा और फिर इसमें सिग्नल लगाया एट व्हाट फ्रीक्वेंसी इट वाइब्रेट्स। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही ये वाइब्रेशन होते हैं। अब इसका मास यदि बदलें तो 2 मैग्नेट लगा दें तो दूसरी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होते हैं। ओके, मैग्नेट तो वही है बट उसका मास चेंज हो गया ना, 2 मैग्नेट जुड़ गए तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो गई। राइट, तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। दिस इज व्हाट रमन टॉक्ड अबाउट। ओके, तो हम यदि इस पेंडुलम को देखें, बार पेंडुलम, ये बार पेंडुलम, तो इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, और ये स्प्रिंग मास सिस्टम, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है। तो ये आपस में कैसे इंटरेक्शन कर सकते हैं? ओके, जस्ट सी हाउ दे इंटरेक्ट। ओके, तो जितनी देर इसका मैग्नेट इस मैग्नेट के फील्ड में आता है, इंटरेक्शन होता है। ओके, और ये इंटरेक्शन इन फेज भी हो सकता है और आउट ऑफ फेज भी हो सकता है, एंड दैट इज व्हाट वाज द डिस्कवरी ऑफ सीवी रमन। ओके, ही टॉक्ड अबाउट फोटोन जब इलेक्ट्रॉन के पास आता है तो कभी इलेक्ट्रॉन इन फेज एनर्जी ट्रांसफर करता है और कभी आउट ऑफ फेज एनर्जी ट्रांसफर करता है, जिससे फोटोन की एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाती है या घट जाती है, जिसको स्टोक या एंटी स्टोक लाइन कहते हैं। ओके, जिस डिस्कवरी के लिए सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला। राइट, हम एटम्स को देख नहीं सकते, लेकिन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन हमेशा गतिमान रहते हैं और उनका जो मोशन है वो डी ब्रोगली वेव के हिसाब से होता है। तो बोर ने एक कंसेप्ट दिया कि इलेक्ट्रॉन यदि गोल ऑर्बिट में चलता है तो हमेशा उसकी जो 2πr सर्कमफ्रेंस है वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा के ऊपर होनी चाहिए। सो दिस इज अगेन अ क्वांटम प्रिंसिपल। अब इसको किताबों में तो लिखा है, देखें कैसे लेबोरेटरी में। देखने के लिए वी हैव गॉट अ स्पीकर, और स्पीकर के ऊपर एक मेटेलिक स्ट्रिप लगा दी, ठीक है, और इस स्पीकर को सिग्नल जनरेटर से जोड़ दिया। तो जब सिग्नल जनरेटर की फ्रीक्वेंसी बदलते हैं तो एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वी गेट अ डिफरेंट स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ दिस लूप। आप इसको चलता हुआ देखें तो यहाँ इसमें वीडियो में देखेंगे चलता हुआ। ओके, तो ये जो सर्कमफ्रेंस है
इसमें नोड और एंटी नोड दिखते हैं, ठीक है ना, एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। और ये बिल्कुल एग्जैक्टली बोहर ऑर्बिटल्स का जो किताबों में पिक्चर दिखाया कि जो टोटल 2πr शुड बी इक्वल टू λ1 और λ2 और λ3, तो ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन की वेवलेंस कहलाती है। ओके, ये हम इस मॉडल से भी देख सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में डिजाइन किया था मॉडल हमने। ओके, तो ये लूप है और लूप को हम धीरे धीरे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से खींचें तो इसमें तरंगें जनरेट होती हैं, और तरंगों में जो चीज एक फेज में है उसको हम बोलते हैं एंटी नोड, और जो यहाँ रुके हुए हैं उसको बोलते हैं नोड। ओके, तो नोड और एंटी नोड इस लूप के अंदर दिखते हैं, एंड दैट इज वाज द कंसेप्ट ऑफ ए बोहर ऑर्बिट। ओके, इसी तरह से फ्रिक्शन को देखना है तो मूविंग ऑब्जेक्ट यदि इस तरह से चले, ओके, तो मूविंग ऑब्जेक्ट आराम से चल रहा है, ठीक है ना, फ्री ऑफ फ्रिक्शन, बट यहाँ मैग्नेट बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो यदि अल्फा पार्टिकल भी गैस में चले तो वहां दूसरे एटम है, उससे एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। ओके, खाली पास से चलने से, दिस इज कॉल्ड एक्साइटेशन। तो अल्फा डिके भी उसी तरह का प्रोसेस है कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर रहता है और न्यूक्लियस से निकलता है बाहर। ओके, तो एट सर्टेन कंडीशन, राइट, ये जो एनर्जी देता जा रहा है इसमें, राइट, तो इसमें एनर्जी इतनी नहीं रह जाएगी, तो इट विल बी ट्रैप्ड इनसाइड द पोटेंशियल, वो सिचुएशन भी आ जाएगी। तो इस तरह से हम क्वांटम साइंस को विजिबल रेंज में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। तो कंसेप्ट काफी आसान हो जाता है। ओके, तो पीपी खंडेलवाल साहब का यही कहना था कि आप साइंस को ऐसे पढ़ाओ कि आम आदमी को समझ में आ जाए। ओके, एपरेटस ऐसा हो जो विजिबल जैसा हो, पैरामीटर ऐसे हो, अभी देखो ये अंदर ट्रैप हो गया तब बाहर निकल गया। ओके, ठीक है, तो आपको साइंस ऐसी करनी चाहिए, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट ऐसे बनाने चाहिए कि आसानी से समझ में आए। फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल समझाना है हमें, तो वाटर मॉलिक्यूल बना के दिखाओ, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये कैसे जुड़े हुए हैं। राइट, सो देयर इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं हम इसको। ओके, बट मॉडल के रूप में तो स्प्रिंग मास सिस्टम है। ओके, तो स्प्रिंग से बॉल जुड़ी हुई है। सो दिस इज व्हाट इज अ वाटर मॉलिक्यूल। अब ये वाइब्रेट कैसे होंगे, वाइब्रेशन इन वाटर मॉलिक्यूल, तो वाइब्रेशन करने के लिए स्पीकर के ऊपर रख दो इस मॉलिक्यूल को ऑन ए स्प्रिंग, तो देखो किस तरह से चलता है। ओह वेरी नाइस। ओके, तो ये हमें समझ में आ जाता है कि वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन की रेस्पेक्ट में किस तरह से चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको हम टॉर्शनल मोड बोलते हैं, और इसको ये ऐसे भी चल सकते हैं, पास आए दूर जाएं, तो इसको हम स्ट्रेचिंग मोड बोलते हैं। ओके, तो किताबों में ये सब लिखा हुआ है, बट इनको विजुअलाइज करना इज इनोवेशन इन साइंस टीचिंग। वाटर मीथेन मॉलिक्यूल, इस तरह से मीथेन मॉलिक्यूल नजर आता है, CH4 कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स। ओके, तो इसकी डायनेमिक्स देखोगे तो इस तरह से नजर आएगी, ठीक है ना। ये टॉर्शनल मोड है, ये हिल रहे हैं ना सभी बॉल। ओके, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ये टॉर्शनल मोड एक्साइट होता है, और दूसरी फ्रीक्वेंसी पे दूसरा मोड एक्साइट होता है, जिसको हम स्ट्रेचिंग मोड कहते हैं। ये बॉल आगे और आगे पीछे भी होते हुए दिख रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेचिंग मोड। So this happens at different frequencies. So all these concepts can be bought in visible range. Okay, so that has been the lesson of Professor D. कि आप साइंस के कंसेप्ट को कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स से मत सिखाओ, सिंपल एक्सपेरिमेंट से डेमोन्स्ट्रेट करो। That is what we are doing and enjoying. Okay, जैसे प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा दिखाओ कि क्या होता है प्लाज्मा, खाली कह देने से बात नहीं। तो एक वैक्यूम चेंबर के अंदर हाई वोल्टेज लगाओ
तो गैस आयनाइज हो जाती है, और आयनाइज हो जाती है तो प्लाज्मा बनता है. We have a small vacuum chamber about 2 liters in which we have got 3 electrodes where we can apply some biasing. हाई वोल्टेज लगाते हैं. And to the electrode, one straight wire is connected of iron and another a ring electrode is connected. यदि हम Once इसको there is पॉजिटिव air, लगाएं और there इसको is नेगेटिव no लगाएं, flow of current when biasing is there. When we remove air, suddenly the gas discharge starts and we get a very nice plasma across the electrodes. प्लाज्मा है Across आयनाइज्ड स्टेट ऑफ the गैस, उसको negative electrode, where the ions are collected, we get more density of the plasma. Across the positive electrode, where the electrons are collected, there is no much illumination. So such phenomena we can see in the laboratory. अब खिलौने से साइंस सीखना, ठीक है ना? Play, enjoy and learn. This is the theme. ये खिलौना है जो हम गाड़ी में लगाते हैं, और ये डांस करता है. अब इसकी फ्रीक्वेंसी यदि हमें चेंज करनी है तो अगेन टेबल टेनिस की बॉल यहाँ लगाई टेबल टेनिस की बॉल, और इसको स्पीकर पे लगाया और सिग्नल जनरेटर से फ्रीक्वेंसी दी, तो किस फ्रीक्वेंसी पे कौन सा मोड एक्साइट होता है ये देखो. ओके, तो ये इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, और ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यदि मैं चेंज करूं, ठीक है, तो इट कैन डू लाइक दिस. तो ही इज सेइंग नो, समझ में नहीं आई बात. ओके, और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हाँ समझ में आई. ओके, ही हैज अंडरस्टूड व्हाट यू वांट टू से. ओके, so this is how, if we teach, things will be memorable, all right, and the children will enjoy, okay, a sense of pleasure. ठीक है, तो इनोवेशन हब एक ऐसी जगह है जहाँ खेल खेल में बच्चे डेमोन्स्ट्रेटिव, क्वांटिटेटिव, इजी टू फैब्रिकेट एंड लो कॉस्ट, ओके, इस तरह के साइंटिफिक मॉडल है, एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट्स है. ओके, एंड ये समझने के लिए हैं एजुकेशन, राइट. और एक बार आप सीख गए तो आप में स्किल ऑफ मेकिंग आ जाती है कि आप कोई चीज़ बना सकते हो, डेवलप कर सकते हो, इनोवेट कर सकते हो योर आइडियाज. सो दैट इज द थीम. सो वी कैन हैव साइंस गैलरी, राइट. इस तरह की साइंस गैलरी और जगह भी है, देखो किस तरह की. There is a common notion that physics is incomprehensible to the people of average ability. If you think so, please visit the Benher's Innovation Hub. Here you can readily and eagerly learn the laws of physics with the help of ingenious models designed by the most dynamic, passionate and outstanding personality, Professor Y.K. Vijay, Director, Center for Innovation in Science Teaching, the IIS University, Jaipur. This Innovation Hub was inaugurated today by Honorable Mrs. Ranjit Kaur Sehmi Ma'am, Founder Principal, Benher Public School, Pilibhit. Here you can easily understand the concept of electromagnetic induction, eddy current, laser diffraction, Doppler effect, rotational dynamics, plasma state, Bohr's orbit, wave formation and many more. So please take out the time from your busy schedule to explore our newly inaugurated Innovation Hub, the only one in this Pilibhit area. Thank you. Okay, ये उत्तराखंड भी पहुंच गए हैं, देखिए. Science is simply common sense at its best. It is a common notion that the concepts of physics are difficult to understand theoretically. Everything is theoretically impossible until it is done. If you feel the same way, please come and visit the exciting Innovation Hub of Delhi Public School, Rudrapur, where you can understand the typical concepts of physics by performing hands-on activities
with the help of amazing models designed by the most dynamic, passionate, and outstanding personality, Professor Y.K. Vijay, President, Indian Association of Physics Teachers, Rajasthan. This innovation hub was formally inaugurated by Dr. C. Tiwari, Director, V. Chandra Singh, Garhwali Uttarakhand University, in presence of Professor Y.K. Vijay, Chairman of DPS Rudrapur, Shri Surjit Singh Grover, Principal, staff and students. Here you can easily understand the concepts of electromagnetic induction, air cannon, Doppler effect, diffraction, eddy currents, vitricity and many more. Why don't you take some time off from your busy schedule and visit the Innovation Hub at DPS Rudrapur to discover a lot more about the world of science. So these are some symbolic. आभा जी ने एक और थीम हमें सजेस्ट किया है कि कंप्यूटर साइंस को कैसे यूज करें. सो लेट मी जस्ट शेयर विद यू one more theme, that using the computer we can do most of these experiments. Okay, I am giving you one example, like tracker. ट्रेकर एक सॉफ्टवेयर है, फ्रीली अवेलेबल है. तो ये जो पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट है, अभी आ रही हूँ 10 मिनट में. हाँ, so you can play this video and record the data. Okay, and these are the data which are recorded, which you can analyze and plot them, graph. Okay, so that's the power of the computation these days. एक्सपेरिमेंट इधर चल रहा है और एक्सपेरिमेंट के साथ साथ हम डेटा यहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं. ठीक है, बार बार एनालाइज कर सकते हैं एंड इन सब का एनालिसिस हम ऑन अ ग्राफ पेपर कर सकते हैं. ओके, अब यहाँ यदि हमें कोई पैरामीटर चेंज करना है तो पैरामीटर चेंज कर सकते हैं एंड वी कैन एनालाइज अगेन. यहाँ यदि हमें खाली x डिस्प्लेसमेंट को प्लॉट करना है या y को प्लॉट करना है, ओके, तो x y कैसे चेंज हो रहे हैं, या वेलोसिटी को प्लॉट करना है या काइनेटिक एनर्जी को प्लॉट करना है, ओके, टाइम को प्लॉट करना है. ठीक है, ऑल दीज वी कैन डू while recording the data. Okay, so well, I think I shared few concepts with you. Am I audible? Yes sir, yes sir. Okay, और यदि फिजिकली देखने हैं तो और खिलौने यहाँ दिखा सकते हैं, जैसे न्यूटन्स क्रैडल होती है. ठीक है ना, तो न्यूटन्स क्रैडल में इफ यू हिट वन, हाउ द एनर्जी गोज टू द नेक्स्ट. ओके, इफ यू हिट टू, देन द टू आर रिलीज. ठीक है, तो ये जो साइंस के प्रिंसिपल है, यदि हम करके दिखाएं तो आसानी से बच्चों के पास पहुंच जाते हैं. दैट हैज बीन द मेन थीम ऑफ प्रोफेसर डीपी खंडेलवाल. ओके, एंड दैट इज व्हाट वी शेयर. जैसे ये सिंपल एक्सपेरिमेंट है, आप घर पे बना सकते हो. बोतल के अंदर एक बोतल है विच इज फ्लोटिंग, तैर रही है. कैन यू सी इट? ओके, व्हेन आई प्रेस इट, ये नीचे चली जाती है. ठीक है, एंड व्हेन आई प्रेस, अनप्रेस, वापस ऊपर आ जाती है. ठीक है, ओके, और यदि दबाएं तो दूसरी बोतल भी चली जाती है. 2 बोतल्स हैं, पहले एक जाती है और फिर दूसरी जाती है. तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं साइंस के फंडामेंटल प्रिंसिपल के, ये करने से समझ में आते हैं. दैट हैज बीन द बेसिक थीम. यहाँ रिंग मैग्नेट लगा के रखे हुए हैं. ओके,
अब यदि इनको हटा दो तो देन you can see the suspended ring magnet. यदि हम उल्टा लगाएं तो भी ये separated रहती है, although the load has increased. Alright? तो इस तरह के जो खिलौने हैं ये बाजार में नहीं मिलते हैं, ये आपको डिजाइन करते हैं. तो टीचर्स डिजाइन दैट conceptual experiments, ओके, और उन्हीं से हम साइंस सीखें. तो अपने apparatus खुद बनाओ, प्रोजेक्ट बनाओ छोटे बड़े, और उससे साइंस सीखो. Alright? So I wish all of you a good time. Enjoy this celebration program of Professor D.P. Khandelwal. Thank you, ma'am, for giving me this opportunity. Alright? And when opportunity will come, we can meet in physical mode also, no issue. Or we can bring in the innovation hub. Soon we are bringing up at Balarsha, and we will set it up on 1st October. Okay, so when you are close by, you can visit that. Okay, thank you. I like to stop. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you very much. And it's a part of the conclusion. For the last end, I would like to invite Professor Y. Gupchi sir for formal vote of thanks. Very good afternoon, one and all present here. Thanks, sir, for giving me an opportunity to propose a vote of thanks. Respected guest, Dr. Abha Khandelwal, Madam, Professor P.K. Ahluwalia, President, IAPT Kanpur. Today's program resource person, Professor Y.K. Vijay, sir, Chairperson of the program, our Principal, Dr. Anjal Naidu, sir, Head of the Department of Physics, Dr. Anil Khandelwal, this son of Dr. Professor D.P. Khandelwal, sir. Dr. Dilip Chaudhary, sir. Dr. P.K. Rajpure, madam. And the convener of this program, Dr. A. Mori, sir. My beloved fellow colleagues, supporting staff, and my dear students. On behalf of Notable Science College and Department of Physics, I am very much thankful to Dr. Abha Khandelwal, madam, for being here and guiding us and sharing the detailed information about the centenary year of Dr. B.P. Khandelwal, sir. I am also thankful to Professor P.K. Ahluwalia, President, IAPT Kanpur, for collaborating with us for conducting such an innovative program on virtual to University Hub. In this way, I also thank to Professor Y.K. Vijay sir for accepting our invitation as a resource person and delivering a talk on Learn Physics with Fun. A big thank to our principal, Dr. Anjal Naidu sir, for their kind permission, guidance, and support and constant encouragement in the organization of such program. I must mention my deep sense of gratitude for all the teaching and non-teaching staff members for their invaluable support, cooperation, encouragement, and untiring efforts to make today's program successful. Last but not least, from the bottom of my heart, I am very much thankful to my dear students for their presence and their kindly listening. Thank you very much. So here we say our program is concluded, and thank you very much from Department of Physics. So you may go. Ma'am, please.